Hi guys, welcome to OAS Hub. केमती अच्छा सोशियोलॉजी ऑप्शनल डेली जेमती क्लास नौ सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 रो मु सॉल्व करथली काली गोटे 22 रो मु नै आस्थिली 22 रो तथापि काली आमे सॉल्व करि चुकी छि 22 रो 23 रो पेपर 1 सरी जाई छि ऑलरेडी 23 रो आपण माने समस्ते लिस्ट देखि देबे कि ऑप्शनल कोन कोन देन आपणकर मेन्स रो मेंटरशिप ପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରନ୍ତି ଜୟକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ ହେବ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅପସନାଲର ବେଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ଅପସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଏନରୋଲ୍ କରେଇ ପାରିବେ କି ମାତ୍ର ପେପର ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପେପର ଟୁର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ देन ऑप्शनल क्लासेस मेंटरशिप मेंस रो मेंटरशिप जोंटा कि वाई यूज और यूनिट वाइज डिस्कशन सी भी मध्य पाइबे आपण तो टेस्ट सीरीज प्लस मेंटर पाई परिबे कि खाली मेंटर करी कि खाली टेस्ट कम्बो भी हे गले आपण तो से अनुसार देखंतु ऑप्शनल फाउंडेशन सो आपण बेसिकली एवरीथिंग आपण पाइबे जहां पाइबे सेमती जीएस रो टेस्ट सीरीज मेंटरशिप जीएस रे भी आपण जॉइन कले टेस्ट सीरीज अछि एड करेंगे काउंट हो तो से अनुसार आप चाहिए जॉइन करेंगे सो जल्दी जॉइन करूँ रिजल्ट को वेट करूँ आई नो बहुत पिला रिजल्ट के भावुँ रखी भावुँ हम कि ना से माइंड तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म इंडियन सोसाइटी discuss the impact of Buddhism in Indian society the causes and consequences just brief the causes okay discuss the impact of Buddhism पहला कौन इंडियन सोसाइटी इम्पैक्ट कौन से क्वेश्चन आज देखा तुम यूनिट वन वन पेपर टू नॉर्मली कौन करती ना मार्क बेसी पेट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन आम देखी व्यू गांधी ना आंबेडकर कास्ट सिस्टम आम आज देखा वन देखा आज देखा डिस्कस इंडियन सोसाइटी माने से इंडिया रे गाउची ये सबू सिस्टम तो फैमिली स्ट्रक्चर जोटा कि आमर इंडिया रे रिजिडली नॉट रिजिडली आइदर जॉइन देन এইটো হ'ব একচুয়ালি এইটো तो देखिए कि बुद्धिज्म जोटा कि आम सिक्स एंड जैनिज्म इगालिटेरियन आउटलुक नहीं जोटा कि सबू न्यू फॉर्म ऑफ जानिले इक्वालिटी को समस्त क्लैरिटी दिया सो फर्स्ट है कौन ना चैलेंज एंड कास्ट सिस्टम इगालिटेरियन आइडल बुद्धि चेक द रिजिड वर्ण हायरार्की ऑफ Brahmin okay that taught that moral conduct some pragya determined the आमर कास्ट सिस्टम वगैरह जो थिला से बाय बर्थ रे डिसाइड करा वर्ण सिस्टम बाय बर्थ डिसाइड सेटा से मना कले पहले जो रिजिडिटी अच्छी वर्ण सिस्टम रे या हायरार्की अच्छी एजुअल कौन कले ना जो बर्थ बेसिस को सी मोराल कंडक्ट को नॉट एग्जांपल संघ मोनास्टिक ऑर्डर रे एडमिट फ्रॉम ऑल कास्ट पीपल
like Upali, Barber, and women like Mahaprajapati Gautami, symbolizing social. So, sociological perspective, Buddhism acted as an agent of social, है ना? Social mobility केमिति ना से there is no caste difference, ना से all caste people, এবং ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ହାଇରାର୍କି as a person by birth, uh, providing lower caste, providing lower caste and marginalized group sense of dignity, participation in participation. Then role in social ethics and Gudala ethical code. Buddhism emphasis on non-violence, so ahimsa, compassion, right to livelihood, help humanize Indian moral thinking. देखिए Emperor Ashoka Dhamma policy, moral value, promoting tolerance. Sociological relevance कौन? Created a shift from a ritual centered religious from a ritual centered ethical and human. Okay. जोटा कि शिफ्ट करता जोटा कि रिचुअल थिला हमर रिलीजन है रिचुअल बेस्ड टू ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड कर देला reflecting the process of value rationalization then constant rationalization and impact on women status empowerment through monastic life buddhism करना है women को allow करते to join the uh, offering them education independence rare in Vedic society. So basically prominent nods non Buddhism रे मतलब क्षमा and Palavana and respect as it contribute to women's as की norm in on education मोनास्टिक बेसिकली खास करके ना बुद्धिस्ट ऑल यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी तक्षशिला sense of institution attracted students China South and Indian intellect Sangh became a key of knowledge. And in the cultural plus Buddhism impact on Indian society was a transformative rather than provided an ethical egalitarian humanism and okay, through its social institution value and cultural expression shaped the moral and intellectual foundation of moral and intellectual foundation of civilization. We can discuss briefly the causes, sequences of patriarchal basically patriarchal discrimination कौन जी सर नमस्कार नमस्कार मोर सोशियोलॉजी ऑप्शन वेरी गुड सर क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्ली मो तीन टाइम्स मेंस लिखलिनी वॉइस ब्रेक होची जी सर एबे देखिलो क्लियर अछि वॉइस ऑफिस नंबर कांटेक्ट करो कि सर एक्चुअली इफ एनी डाउट यू हैव और मते ई नंबर व्हाट्सएप करो एक्चुअली कौन ना ସେଇଟା ହିଁ
क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्ली केमिति लेखिवा लेखुच केमिति ताको देखो ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल खास करके पेपर 2 रे तो बहुत कम मार्क मिले मिलेनी कहीं कि ना आमे पेपर 2 जीएस भलिया लिखि दो जनरल स्टडीज भलिया लिखि देले मार्क मिलिबो सेही जिंस मु तुमु देखौची विथ एग्जांपल the patriarchal discrimination in India stems from deep rooted cultural norms. Patriarchal discrimination, deep rooted cultural norms, patrilineal and patrilocal traditions, economic disparities, weak enforcement of protective laws. Factor contribute to system where male authority is normalized, leading to severe consequences men at age of causes for the patriarchal discrimination. कौन causes आगु देख तो बेसिकली कौन ना patriarchal society कौन ऑलरेडी आमर अच्छी डीप patriarchal patrilineal patrilocal patriarchal माने बेसिकली फैमिली रो हेड मेंबर patrilineal आमर lineage भी फादर को ना patrilocal मेल मेंबर घरे ही बाहागर पर रहिबो आर ऑल ट्रेडिशन जेटा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वीक एनफोर्समेंट ऑफ प्रोटेक्ट सेटा कंट्रीब्यूट करछि male authority normalizing and leading to a severe consequence and society as a whole. The causes of patriarchal discrimination, cultural and religious tradition. Cultural and religious tradition. In texts like Manusmriti emphasis by the women subordination to men subordination. Customs such as dowry, child marriage, forced marriage, religious rituals, and lineage on privilege men as a heads and socialization and so first देखिल कि मनुस्मृति कहिछि कि मेन्स र सबऑर्डिनेशन का मेन एवं कस्टम सच ए डाउरी पर्दा सिस्टम चाइल्ड मैरिज ये मेन मेल कंट्रोल की रीइंफोर्स कर सेति पई रिलीजियस रिचुअल एंड लिनियर सिस्टम वन प्रिविलेज मेन है then socialization and gender rules from childhood boys and girls are socialized differently boys for public rules girls for domestic right or wrong this internalized gender hierarchy से जना पड़ेगा कि बॉयज माने भाई षंढ बाहर नॉर्मलाइजेस मेल डोमिनेंस तो मेल डोमिनेंस नॉर्मलाइज कलाई मैं पिलाटी बेलू तुम ऑलरेडी यू नो योर रूल व्हाट यू आर गोइंग टू डू और व्हाट यू आर नॉट गोइंग सिल्विया वेलविस कांसेप्ट ऑफ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर से सी कहते फैमिली मीडिया एंड कल्चर सस्टेन इनइक्वालिटी कहले फैमिली मीडिया एंड कल्चर एमाने बेसिकली इनइक्वालिटी को सस्टेन कर ओके economy dependence hence limited access to education and employment reinforces patriarchal hierarchy inheritance the patriarchal inheritance prioritize men patrilineal and patrilineal system प्रॉपर्टी पे भी लिमिट एक्सेस एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट जानी कि मेल मेंबर को बेसी पढ़ा जाए then political and legal factors despite constitutional equality implementation gap in gender laws like domestic violence act 5% underrepresenting of women political decision making perpetuate male centric government perpetuate तो बेसिकली देखो representation वुमेन रिजर्वेशन बिल आसला
ସେଇଥିରେ 33% रिजर्वेशन कथा कहगला बट ये आसला कहीं ना ऑलरेडी पॉलिटिकल डिसीजन वुमेन रो पार्टिसिपेशन 12% 10% 11% जोटी कि पॉपुलेशन परसेंट बट पार्टिसिपेट सो से जो गैप्स अच्छी इम्प्लीमेंट पॉलिसी रे आम पंचायत जानिलु पंचायत पार्टिसिपेशन 1/3 कलु बट सेटा पंचायत प्रति पंचायत हो जाइए मान छिड़ा कर consequences of patriarchal discrimination gender inequality okay consequences of patriarchal discrimination gender inequality unequal access to education employment and healthcare gender gap in literacy and wages reflect systematic bias correct systematic तो unequal access देखो वुमेन मान को मे भी आमर अच्छी जदि है झील पिला है पिला को भल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मली प्रिफर करा जाए पुओ पिला की जेंडर गैप इन लिटरेसी reflects violence against women violence against patriarchy legitimize जदि कथा न मानला harassment or killing sexual harassment ये सब the national crime record bureau ncrb data shows rising gender based data shows rising gender based violence fight fight legal female feticide and skewed sexes ये भी गोटे एमती तुम देखियो प्रिफरेंस ऑफ द सन लीड्स टू सेक्स सिलेक्टिव देखिले पे जना पड़ जाउची अल्ट्रासाउंड होची कि झियो अछि सो जदि झियो अछि ताको मार दो आ पुओ अछि जदि ताको रखुचन चाइल्ड सेक्स रेशियो धीरे धीरे कमिया को लागि 920 और 1000 जोंडे कि कम और 1000 देखु तुमको लागुची कम बट 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ तो देखियो reflect deep-seated patriarchal mindset, valuing male here is psychological and emotional, and internalize inferiority, face identity, suffer from mental health due to constant subordination, limited, due to constant subordination and limited socio-economic underdevelopment. Discrimination rate half the population potential. Discrimination restrict half the population's productive potential. Patriarchy thus acts as a barrier. Acts as a right. Yes, sir, am I audible? किए अच्छो ताको कि वॉइस रे इश्यूज होची तो देखो कौन कौन इश्यूज आसिला हमें देखले कॉजेस ऑफ पेट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन कल्चर एंड रिलीजियस ट्रेडिशन जो हमर अछि कॉजेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंशिएंट मनुस्क्रिप्ट जोंडे कि सेथुर देखिले सोशलाइजेशन एंड जेंडर रूल्स सिमिलरली इकोनॉमी डिपेंडेंस पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स ये गुड फैक्टर्स रहिला consequence of patriarchal gender inequality violence against women ये हमें देखिले साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट
सब गणा जाए कि वुमेन इन सप्रेस करवा करवा ये सब इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट discrimination restrict half of the population's productive potential under कहा जाए नहीं patriarchy thus act as a barrier to inclusive growth and social are very important patriarchy discrimination in India is a structural and cultural এটা নয় কি temporary structure not merely individual not account of individual so overcoming it requires multi-dimensional gender sensation economic empowerment legal enforcement cultural they are very important points write out write down as Amrita Sen notes empowering women is not only a matter of justice very important thing then this statement in empowerment so just write it down see my important point are the views of Gandhi and Ambedkar on caste system Gandhi and Ambedkar two of the most both sought to eradicate caste based but their approach philosophical foundation is different एना आंबेडकर निजे फेस करथिले गांधीजी देखि तो गांधी व्यूज फॉर्मिस्ट अप्रोच चाहले कि भाई सी वर्ण सिस्टम जानी थे एजीटी एंड एक्सेप्ट करथिले बट फंक्शनल सेंस रे एक्सेप्टेड इट्स अ डीजेनरेशन इनटू कहले वर्ण सिस्टम ठीक अछि बट ए जो अनटचेबिलिटी एवं हेरिडिटरी बेस्ड जो हायरार्की ताको भी सी सेट करथिले ओके तांको हिसाब रे वर्ण गोटे ना कोन एज ए डिवीजन अवेलेबल नॉट ए स्टैट वर्ण एज ऑक्युपेशन बेस्ड जमती तार ओरिजिनल फॉर्म सी से थिला ऑक्युपेशन बेस्ड रहिथिला ना कि ये लेबर माने सेटा को जे डिवीजन ऑफ लेबर नॉट स्टेटस देन मोरल एंड स्पिरिचुअल बिलीव दैट कास्ट सिस्टम जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाए सेटा रिमूव करे थ्रू मोरल एवोकनिंग ताक केमति रिमूव करा जाय परिबो मोरल एवोकनिंग सेल्फ प्यूरिफाई एंड सोशल moral awakening self purification and tomorrow social reform there rather than it promoted upliftment of the horizon a children's god horizon na deythile and advocated for their social inclusion then means of social harmony Gandhi emphasis करथिले interdependence among the varna for maintaining social unity and cohesion समस्त भितर डिपेंडेंट होगी रहिबे एवं सोसाइटी भितर बॉन्डिंग है आंबेडकर कौन रेडिकल स्ट्रक्चर निजे फेस करते कहते कास्ट सिस्टम एज ए इनहेरेंटली एंड ओपन गांधी वर्ण सिस्टम एक्सेप्ट करते बट अनटचेबल रिजेक्ट करते बट ये पूरा सिस्टम को स्ट्रक्चरली रूटेड इन हिंदू रिलीजन टेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी कि ये टेक्स्ट और रिलीजियस आइडियोलॉजी रे ये कास्ट सिस्टम आ सी कहले कास्ट हैड टू बी डेड ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ଏନହିଲେସନ୍ ଅଫ ତାକୁ ଉଠେଇକି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ମ କରିହେବ ତାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପଲିଟିକାଲ ଏଣ୍ଡ ରିଗାଲ advocated constitutional safeguard advocated constitutional safeguard affirmative action and social justice laws to empower the leader okay. Rejected Hinduism's scriptural basis for caste and eventually embraced Buddhism as a path of focus on so ये सब फर्स्ट करना पॉलिटिकल लीगल रेमेडी चाहूले सेकंड है कौन ना हिंदुइज्म जो स्क्रिप्चर मेंशन अच्छी जो मनुस्मृति वगैरह रे ताको से रिजेक्ट कले एंड से माने सेफगार्ड दबा को चाहूले एंड एफर्मेटिव एक्शन और सोशल जस्टिस लॉ यांको रिलेटेड एंड फोकस ऑन स्ट्रक्चरल चेंज ये कहउतले कोन ना एजुकेशन इकोनॉमी और ए अथवा ओके कंपैरिजन देखिवा गांधी जी गांधी गांधी कर अप्रोच थिवा ये रिव्यू व्यू बेसिकली फंक्शनल था मोरल डिवीजन ऊपर
देन सॉल्यूशन कौन गांधी जी कहते कि मोराल रिफॉर्म हम बट ये कहते लीगल पॉलिटिकल रिलीफ नॉन वायलेंस एंड परसुएशन थ्रो रे या हटेवा सॉल्यूशन बट ये कहले कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड स्टेट एक्शन लास्ट पॉइंट रिलीजियस स्टैंड पॉइंट on a reinterpretation of the Hindu section of the revolution. So both, देखिए both Gandhi and Ambedkar opposed on South and egalitarian. Gandhi approach was moral and reform, whereas Ambedkar their divergence reflects two distinct sociological pathway of social change, reform within tradition versus transformation. Okay, so ये थिला आजिर क्वेश्चंस आमे तीनटा क्वेश्चंस कले पेपर 2 2023 2023 पेपर 2 2023 रो पेपर 2 जोटा कि आपण माने फर्स्ट तीनटा क्वेश्चन ये सर नेक्स्ट टुमरो आमे आउ तीनटा क्वेश्चंस करबा तो आमे डेली डेली एमती क्वेश्चंस कले तुमर प्रैक्टिस हे जिवो ट्राई करो मु जो भला लेखुची निजे देखि दियो देन तापर लेखिया ट्राई करो सोशियोलॉजी रो फाउंडेशन जो क्लैरिटी नाही देन इफ दे आर मेंस गिविंग मेंस मु कंप्लीट करबी सोशियोलॉजी रो ऑप्शनल रो मेंटरशिप केवल पढी चंती अछि ठीक है आपण क्लियर करि पारि सेटा आपण करि परिबे देन ओसीएस रो मेंस रो टेस्ट सीरीज एंड मेंस रो मेंटरशिप प्रोग्राम मध्ये जो कि मेंस पई आपन को डेफिनेटली हेल्प करी टेस्ट सीरीज हम बसी रहउची आपन पाखरे जहां भी डाउट हबो यू नो सो कम एंड गिव थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।